लोग ऐसा। ओके चलो ठीक है, इंट्रोडक्शन अपन देख लेते हैं अभी। Okay class, today we are going to start ecology and environmental segment. You know very well, ecology and environment very important for PT as well as mains. What do you think? कितने क्वेश्चंस आते होंगे PT में EVS? 15. About 10 to 15 approx. Okay. एक एवरेज लेके चलो तो मोर देन 15 क्वेश्चंस एवरी ईयर पूछते हैं EVS। बट प्रॉब्लम क्या है, 99% क्वेश्चंस कहां से पूछेंगे? करंट अफेयर। अब प्रॉब्लम ये है कि करंट अफेयर कैसे करें, राइट? स्पीसीज इन न्यूज, नेशनल पार्क इन न्यूज, एंड रामसर साइट इन न्यूज। ईबीएस बहुत बेकार टॉपिक है, बहुत बेकार। मैं आपको कुछ एनालिसिस बता देता हूँ। सिलेबस देखिए सब लोग, सिलेबस पता है सबको? ओके मेरे पास एक एनालिसिस है, मैंने बनाया है खुद का, अपन देखते हैं उसको। बस ये 78% हुआ है। अमर सर ऊपर टॉप पे, ईवीएस एनालिसिस। ओके बुक सबके पास है या मिल गया है? इसको नहीं मिला। अपने बुक का आपके पास है सवाल से ना आपको मिल गया है? आप ओके ईवाई को सिलेबस पर तो मिल गया वो फर्स्ट ये अभी देखो। ओके दिस इज आवर सिलेबस। एक यूपीएससी ने एक चीज करके रखी है सिर्फ हम लोग के सब्जेक्ट में, क्या? दे डू नॉट रिक्वायर सब्जेक्ट स्पेशलाइजेशन, और कहीं नहीं लिखा है उसमें। जनरल इशू ऑन एनवायरमेंटल इकोलॉजी, बायोडाइवर्सिटी एंड क्लाइमेट चेंज, बट स्पेशली एक पॉइंट लिख के रखा है इसमें, दैट डू नॉट रिक्वायर सब्जेक्ट स्पेशलाइजेशन। मेंस conservation, environmental pollution and degradation, and EIA, environmental impact assessment। आई होप आपको पता होगा ये कहां पढ़ते हैं हम लोग? डीएम। EIA से यूपीएससी की हिस्ट्री में आज तक 2 क्वेश्चंस आए लास्ट ईयर, और एक आया था 2014 आई थिंक, 14 या 15। इसके अलावा कभी EIA से क्वेश्चन नहीं आया। बट जनरल इशू ऑन एनवायरमेंटल इकोलॉजी, बायोडाइवर्सिटी, क्लाइमेट चेंज, इनमें क्या पढ़ना है? एक फॉर्मूला मैं बताता हूं आपको। ईवीएस मींस व्हाट, देखते हैं। बैक, सॉरी सर, बट मुझे बैक करके एक दोबारा दूसरी फाइल ओपन करनी है। सर यहाँ से आप कर सकते हैं। ना मेरा दूसरा पीडीएफ है, बैक करना है मुझे। यहाँ से कर सकते हैं, इसमें इंपोर्ट में होगी। ओके ठीक है। ओके 2021 क्वेश्चन, which one of the following is a filter feeder? साइंस। ओके ये मैं एक टॉपिक दे रहा हूं, ये आपको कहां से दिख रहा है क्वेश्चन? जनरल साइंस, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, कहां से दिख रहा है? फिल्टर फीडर, कैटफिश, ऑक्टोपस, ऑयस्टर, ये कहां से दिख रहा है क्वेश्चन? बायोलॉजी। ओके बायोलॉजी। अगेन कांग्रेस ग्रास, एलिफेंट ग्रास, लेमन ग्रास, बायोलॉजी। ओके
Again, diatoms, cyanobacteria, biology. Lichen, fern, moss, mushroom, biology. Okay. Jellyfish, seahorse, biology. Nitaria, fungus, protozoa, again biology. Okay, species again, pangolin, marmot, hedgehog, biology. Okay, इतना तो समझ में आ गया. EVS means biology plus, okay, graphite, base subject, geography. Tropical rainforest, evergreen rainforest, geography. Means EVS means science, general science plus geography. Okay. Benzene pollution, AQI, दिल्ली में रहते हो यार, AQI तो पता ही है. Benzene pollution, AQI, subject science. Science specifically अगर बात करो तो chemistry. Okay. Carbon footprint, carbon, chemistry. Mercury, coalish means chemistry. Means EVS means biology plus geography plus chemistry. इतना तो क्लियर है. Okay, with proof. कार्बन मोनोऑक्साइड, मीथेन, ओजोन, सब केमिस्ट्री है ना, साइंस. कार्बन डाइऑक्साइड, AQI. अच्छा, इसका आंसर बता पाओगे क्या? क्योंकि मुझे लगता है आप दिल्ली रहते हो तो AQI बता सकते हो. 2016 UPSC PT क्वेश्चन. 2016 PT UPSC क्वेश्चन. सर अभी कुछ पढ़ाया तो है नहीं, क्वेश्चन पूछ रहे हो. ओके, रुक जाओ, कोई बात नहीं. ABCD सिंपल क्वेश्चन. आंसर A, C. Okay. A. Okay. A. Okay. Carbon dioxide. Answer. UPSC 2016 question. एयर क्वालिटी इंडेक्स. अब दिक्कत हो जाती है. अब क्या करता है, हाउ मेनी. अब क्या आते हैं, हाउ मेनी, तब दिक्कत जाती है. ये तो बड़ा इवेंट हो गया, वन क्वेश्चन. यार मुझे उम्मीद था कि AQI एटलीस्ट आपको पता होगा. AQI मींस एयर क्वालिटी इंडेक्स. में कभी भी CO2 मेजर नहीं करते, कार्बन डाइऑक्साइड मेजर नहीं करते. हाँ, कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड में आपको बता दूंगा, इसकी ट्रिक भी बहुत इजी है. ट्रिक ठीक है, बहुत इजी ट्रिक है. सल्फर ऑक्साइड्स, नाइट्रोजन ऑक्साइड, नाम सुने होंगे अगर. ठीक है. व्हाट इज दिस? NH3 मींस अमोनिया. O3 मींस ओजोन. CO मींस PB मींस lead. PM मींस प्राइम मिनिस्टर. परिक्लोमीटर कौन? 10 and PM 2.5. रीजन मैंने गलत किया था इसलिए मुझे याद. और मुझे अब तो इतना अच्छे से याद हो गया कि कभी मैं भूल ही नहीं सकता. कैसे याद करना है? सिंपल का टॉपिक है. 3 वाले याद कर लो पहले, फिर 2 वाले याद कर लो, फिर 0 वाले याद कर लो, और ये PM तो याद करना ही करना. 2016 का क्वेश्चन है. 2021 आई थिंक 21-22 में एक क्वेश्चन फिर से आया, PM 2.5. 23 में अगेन रिपीट क्वेश्चन था. क्या? एसिड रेन, नाइट्रोजन ऑक्साइड. ऐसा नहीं है रिपीट नहीं होते क्वेश्चन, क्वेश्चन रिपीट होते हैं. ओके, तो ये बड़ा बेसिक सा क्वेश्चन था. ओके, अपन आगे बात करते हैं. मींस EVS मींस बायोलॉजी प्लस केमिस्ट्री प्लस ज्योग्राफी. यहां तक क्लियर है? ओके. सब्जेक्ट पॉलिटी. सब्जेक्ट पॉलिटी. ओके. EPA. You know what EPA? WPA. Most favorite topic.
EPA एंड WPA, एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट एंड वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, हम बहुत डेप्थ में जाएंगे इसकी, ठीक। अगेन एग्रीकल्चर मीन्स ज्योग्राफी का पार्ट है, ओके, ज्योग्राफी का ही पार्ट आ गया, ठीक है। एग्रीकल्चर क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन मीन्स अगेन ज्योग्राफी का ही पार्ट है। बायोफ्यूल पॉलिसीज अगेन एग्रीकल्चर का ही पार्ट है। एग्रीकल्चर मीन्स EVS मीन्स क्या क्या हो गया सर? बायो प्लस केमिस्ट्री प्लस जियोग्राफी प्लस पॉलिटी प्लस एग्रीकल्चर में अलग कर रहा हूं, एग्रीकल्चर। दैट्स अ रीजन कि सबसे डिफिकल्ट सब्जेक्ट है और सबसे ज्यादा क्वेश्चन यही लेके जाता है। 15+ क्वेश्चन एनुअली आने हैं, मतलब आने, कहीं नहीं जा रहे आपके क्वेश्चन, 15+ क्वेश्चन आएंगे, लेकिन उसमें करंट अफेयर पढ़ना है तो बहुत ज्यादा। बट करंट अफेयर कैसे आता है? स्टैटिक प्लस करंट अफेयर, प्योरली करंट नहीं आता ना प्योरली स्टैटिक आता है। तो क्या करें सर, कैसा करें? तो हम लोग जो डिस्कस करेंगे स्टैटिक प्लस करंट को लेके चलेंगे तो ज्यादा बेहतर रहेगा, ओके। एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है EVS का, स्पीसीज इन न्यूज। मोर देन 4 to 5 क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे हमेशा। तो सिलेबस क्या है, क्या पढ़ना क्या है इसमें? हम किस हिसाब से पढ़ेंगे सर? हमें साइंस पढ़ना है, केमिस्ट्री पढ़ना है, ज्योग्राफी, पॉलिटी, एग्रीकल्चर, क्या करेंगे सर? तो ट्रस्ट मी, हम जितने भी एस्पेक्ट हैं उसको इजीली कवर कर लेंगे, ठीक है। मैक्सिमम क्वेश्चन हमसे बन जाएंगे, मैं नहीं बोल रहा हूं 100% इम्पॉसिबल है, नहीं हो सकता, लेकिन मैक्सिमम क्वेश्चन हमसे मिल जाए, ओके। सिलेबस लिखो, स्टार्ट करो। पहले एक फॉर्मूला, प्लीज ये फॉर्मूला याद रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। रीजन क्यों दिमाग में होना चाहिए कि EVS मींस ये चीजें हो सकती है, हमें ये एस्पेक्ट पढ़ना है। एक एग्जांपल दे रहा हूं, ठीक है। आई थिंक सुना सुना है NTCA, NTCA फुल फॉर्म नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी, ओके। मींस नो डाउट ये समझ में आ रहा है EVS का क्वेश्चन है। क्या पूछना चाहिए हमसे, क्या पूछना चाहिए यूपीएससी को? NTCA का पर्पस क्या है, राइट? टाइगर कंजर्वेशन क्या होता है, बिग केट्स क्या होता है। पर यूपीएससी वो क्या पूछता है? NTCA का चेयरमैन कौन है, मतलब उसने कौन सा एस्पेक्ट एड ऑन किया उस क्वेश्चन में? पॉलिटिकल एस्पेक्ट। ये PYQ बता रहा हूं मैं, जो भी बता रहा हूं आपको, PYQ के बिना हमारे सब चीजें सॉल्व नहीं होंगी, PYQ लेके चलना ही पड़ेगा। सीधा पूछो ना यार, NTCA का काम क्या है? ये पूछो हमसे कि NTCA का पर्पस क्या है। ये पूछो बिग केट्स मींस व्हाट, बिग केट्स में कितनी केट्स इंक्लूड है, इंडिया में कितनी है, ये सब पूछो। टाइगर सेंसस कितने साल में होता है, ये पूछो। नहीं, क्या पूछता है? NTCA के चेयरमैन कौन है। तो मतलब पॉलिटिकल एस्पेक्ट, मतलब हमें कोशिश करना है कि जो भी टॉपिक न्यूज में रहेंगे उसके सारे एस्पेक्ट कोशिश करेंगे कि कवर कर पाए। इसलिए मुझे भी पढ़ना पड़ेगा, आपको भी पढ़ना पड़ेगा, मुझे भी डेली पढ़ के आना ही पड़ेगा। रीजन करंट अफेयर पढ़ाना है भाई, तो पढ़ना तो पड़ेगा। आपने पूछ लिया कि सर अभी संडे को न्यूज आई है, एक पर्टिकुलर स्पीसीज है, इसके बारे में बता दो, तो मुझे पढ़ना पड़ेगा, तभी तो मैं बता पाऊंगा। इसलिए EVS बहुत डिफिकल्ट सब्जेक्ट है, ठीक है, ओके। तो सबसे पहले फॉर्मूला, EVS मींस बायोलॉजी, केमिस्ट्री, जियोग्राफी, पॉलिटी प्लस एग्रीकल्चर एंड 99% करंट अफेयर। विदाउट करंट अफेयर इकोलॉजी एनवायरमेंट नहीं हो। फर्स्ट टॉपिक syllabus number one basic terminology basic terminology means 2024 questions. Number one statement, all turtle are herbivorous in nature. Number two statement, all snakes are oviparous in nature. We know very well herbivorous, carnivorous, omnivorous, very well, right? But what are the meanings of oviparous and viviparous?
That's the reason. First topic, terminology. Okay. We are mammals, right? We are mammals. You know, na? We are mammals. Okay. 3 types of mammals in all over the world. Number 1, prototherian. Number 2, metatherian, also called marsupial. Or number third, eutherian. UPSC asked, marsupial naturally found in India, yes or no? सर ये क्या है? सीधा पूछो ना भाई, कैंगरू मिलता है नहीं मिलता है ना, ऐसा नहीं पूछता है. That's the reason. First topic, terminology, ताकि पता चल जाए oviparous means what, viviparous means what, marsupial animals means what, cold blood animal, warm blood animals, ये सारी चीजें. ओके. ये टॉपिक्स पढ़ने हैं हमको, है ना, बहुत अच्छे से ये टॉपिक पढ़ना है. एक चलो क्वेश्चन से, मीजोफाइट्स, ज़ीरोफाइट्स, हेलोफाइट, हाइड्रोफाइट्स. आई डोंट नो कि इसके बारे में आपको पता है नहीं पता. फाइट्स मींस प्लांट्स. फाइटा मींस प्लांट. ओके, फाइटा मींस प्लांट. ओके. कोस्टल एरिया में एक इंपॉर्टेंट प्लांट होता है, आपने शायद नाम सुना होगा. कौन सा? जो हाई टाइड्स में भी काम आता है. मैंग्रोव्स प्लांट्स. सुने हो मैंग्रोव्स प्लांट? यूपीएससी क्या पूछता है? मैंग्रोव्स नेचुरली फाउंड इन कोस्टल एरिया. ओके, बेसिक क्वेश्चंस. ओके. ओविपेरस एंड विविपेरस. ओवा मींस एग लेइंग एनिमल्स. विवी मींस बेबी को जो बर्थ करते हैं वो वाले एनिमल. तो ये किसके लिए टर्म यूज होती है? एनिमल्स के लिए, प्लांट्स के लिए नहीं. बट एक्सेप्शन है इसमें. कौन? मैंग्रोव्स. मैंग्रोव्स विविपेरस प्लांट. सर ये कैसे हो गया? रीजन, मैंग्रोव्स एग्जाम्पल ऑफ हेलोफाइट्स. हेलो मींस सॉल्टी. तो सॉल्टी एरिया में उगेगा वो, और वो क्या होगा? हेलोफाइट्स. इसका हम डिटेल में डिस्कस करेंगे कि हेलो मींस क्या होता है. तो ऐसे क्वेश्चंस पूछता है ये. सी ग्रासेस. नाम सुनो सी ग्रासेस. सीवीड. सुनो सीवीड. ओके. सीवीड एग्जाम्पल ऑफ एल्गी, एग्जाम्पल ऑफ फंगस. फाइटा है एल्गी. ओके. सीवीड फार्मिंग न्यूज में. सीवीड फार्मिंग पढ़ना पड़ेगा हमको. सीवीड फार्मिंग क्या होता है? ओके. तो ये सारी जो टॉपिक्स है ना, बड़े परेशान करते हैं. इसलिए हम फर्स्ट क्या पढ़ने वाले हैं? बेसिक टर्मिनोलॉजीज. कि होती क्या है बेसिक टर्मिनोलॉजीज. ये विविपेरस, ओविपेरस एक बार डिस्कस कर लो, खत्म. हमेशा याद. कोल्ड ब्लड एनिमल, वार्म ब्लड एनिमल. ओके, मैंने जानबूझ के विराट कोहली ले लिया, ठीक है, वो याद रहता है हमको. viviparous animals, oviparous animal, example of viviparous animals. प्रैक्टिस भी करेंगे हम. श्योर. Okay. I hope you understand. Huh? Okay. Okay. Number 1, syllabus. Number 1 point, terminology. Terminology means like oviparous, viviparous, cold-blooded animal, warm-blooded animals, and what are the means of reptiles, what are the means of amphibians. That's okay. Number 2 topic, basic definitions. Number 2 topics, basic definitions. Basic definition. Okay. Basic definition means what? Like ecology. I think you know very well. Logy means always. Logy means study. Eco means home. Means
study of home called ecology. Okay. Home means what? What is the difference between home, environment, and habitat? What do you think? What is the meaning? What is the difference between home, habitat, and environment? Okay, just example. Your colony, environment, home, habitat. Environment. Okay. Your home, your house, environment, habitat, colony. Habitat. Okay. And your room. Okay. Your colony, example of environment. Your house, your home, and your room, example of habitat. Okay. Habitat means favorable things, favorable conditions. Okay. Just example. You know cheetah? चीता इंडिया में मिलेगा? फाउंड कहाँ मिलेगा इंडिया में? एमपी, पालपुर कूनो, है ना? कूनो नेशनल पार्क. Why पालपुर कूनो? We are so many national parks, so many wildlife sanctuaries. Yeah, habitat. That's the reason African habitat and पालपुर कूनो habitat दोनों कंडीशन क्या है? सेम, सिमिलर फॉर चीता. ओके. नेक्स्ट, फर्स्ट बेसिक टर्मिनोलॉजीज, नंबर 2 बेसिक डेफिनेशंस, नंबर 3 बायोडाइवर्सिटी. बायोडाइवर्सिटी बायोडाइवर्सिटी biodiversity. Okay, what is the means of biodiversity? Bio means living things, diversity means variation, means what? Variation in living things called biodiversity. Okay, P right. 0 degree, Tropic of Cancer, Tropic of Capricorn. Okay, suppose 0 degree पे आप, okay, and move कर रहे हो कहाँ? Towards the pole. Biodiversity decrease or increase? Why? Sunlight. Okay. Favorable condition, and I think you know that. Yes. 0 degree, sunlight, temperature, rainfall, favorable condition, right? Tropical rainforest. Two types of tropical forest: tropical evergreen rainforest and tropical deciduous. UPSC 2024 question. What is the example of deciduous tree? 2024 क्वेश्चन. व्हाट इज द एग्जांपल ऑफ डेसिडस ट्री? साल, ऐसे करके कुछ एग्जांपल्स. ओके, तो ठीक है. टुवर्ड्स द पोल आप जाओगे तो क्या हो जाएगा? बायोडाइवर्सिटी डिक्रीज. ओके, नेक्स्ट टॉपिक पोल्यूशन. नेक्स्ट टॉपिक पोल्यूशन. नेक्स्ट टॉपिक पोल्यूशन. How many types of pollution? Air, water, and soil, noise, and sound pollution, noise. Okay, and
Space pollution, space debris. I think so. 2021-22 question. What is Kessler syndrome? Kessler syndrome. Sound like disease, right? No. Kessler syndrome related to space debris. ऐसे क्वेश्चंस पूछते हैं. ओके. पोल्यूशन ऐसा नहीं पूछेगा क्या? वाटर पोल्यूशन, नॉइस पोल्यूशन ना. You know about thermal pollution? Thermal pollution. Okay. Rawat-Bhatta thermal power plant. Rawat-Bhatta thermal power plant. You know about? Okay. Kakrapar thermal power plant. Thermal energy, coal energy means uranium-235. You for uranium-235. और इसका यूज कहां पे होना है? थर्मल पावर, न्यूक्लियर पावर प्लांट. तो न्यूक्लियर पोल्यूशन इंपॉर्टेंट. ऐसा नहीं पूछना यूपीएससी व्हाट इज द मीन्स ऑफ वाटर पोल्यूशन, व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ वाटर पोल्यूशन, व्हाट इज द कॉजेज ऑफ वाटर पोल्यूशन. ये सबको पता है. लाइट पोल्यूशन, व्हाट इज द मीन्स ऑफ लाइट पोल्यूशन? लाइट मीन्स okay. Excessive use of artificial light called light pollution. Excessive use of artificial light called light pollution. Okay. प्रॉब्लम क्या होगी इससे? प्लांट को प्रॉब्लम है एंड एनिमल्स को प्रॉब्लम है. ओके. यू आर diurnal animals or nocturnal animals? Terminology. Nocturnal means what? Active in night. Diurnal means what? Active in day. We are mammals. We are diurnal animals. Okay. Light pollution से किसको अफेक्ट होना है ज्यादा? Nocturnal animals. Example. You know firefly. कब देखा था लास्ट टाइम firefly? Firefly means जुगनू. Yes, जुगनू. Yes. रीजन यहाँ पे पोल्यूशन है. गांव में पोल्यूशन नहीं मिलेगा, लाइट पोल्यूशन. दैट्स द रीजन के आपको फायरफ्लाइज कहां मिलने वाले हैं, है ना, विलेज एरियाज में. बट धीरे धीरे वो भी एक्सटिंक्ट होने वाले. रीजन लाइट पोल्यूशन. तो यूपीएससी ने ये जो पोल्यूशन वाला जो टॉपिक है उसमें क्या पूछेगा? करंट अफेयर लाइक थर्मल पोल्यूशन, न्यूक्लियर पोल्यूशन, स्पेस पोल्यूशन एंड लाइट पोल्यूशन. वाटर पोल्यूशन से रिलेटेड क्वेश्चंस कम मिलेंगे. ओके. नेक्स्ट सिलेबस नंबर 1 पॉइंट बेसिक टर्मिनोलॉजीज. नंबर 2 पॉइंट basic definitions. Number 3rd point biodiversity. Next topic pollution. Okay. Next climate change. Next topic climate change. Next topic climate change. Climate change बहुत ब्रॉड टॉपिक है, इसमें सब कुछ आ जाएगा. लाइक ओजोन डिप्लेशन, ग्लोबल वार्मिंग. लिख लो ब्रैकेट. ओजोन डिप्लेशन, ओशियन एसिडिफिकेशन, ग्लोबल वार्मिंग, heat dome. Dome, you know, heat dome. Okay. Geographical terminologies. Okay. And etc.
Next topic. Important act and policy related to EVS. Important act and policies related to EVS. Important act like WPA Act, EPA Act, and Forest Act. Okay. Important policies like forest policies. Okay. तो इंपॉर्टेंट एक्ट एंड पॉलिसीज रिलेटेड टू EVS. पर प्लीज हम लोग कौन सा पढ़ने वाले हैं? करंट अफेयर रिलेटेड. ओके. पुरानी चीजें नहीं आता. करंट अफेयर रिलेटेड. ओके. ओके मैम. तो नंबर 1 टॉपिक बेसिक टर्मिनोलॉजीज. फर्स्ट हेडिंग बेसिक टर्मिनोलॉजीज. नंबर 1 plant adaptations. Number 1 terminologies, plant adaptations. Number 1 topic, plant adaptations. Plant adaptations. Okay. What are the means of adaptations? What are the means of adaptations? What do you think? Adaptation means what? We change ourselves to get favorable to other conditions. Favorable to other conditions. Okay. Suppose today we are living in Delhi, right? सपोज आपको 1 या 2 दिन के बाद श्रीनगर पहुंचाना है. क्या होगा? विंटर वहां पे बहुत ज्यादा कोल्ड है, राइट? क्या होगा? आई थिंक 1 or 2 or 3 days प्रॉब्लम जाएगी. धीरे धीरे बॉडी क्या हो जानी है? अडॉप्ट. दैट्स कॉल्ड अडॉप्टेशन. नहीं होगा तो अडॉप्ट क्या होगा? मर जाओगे. ओके. Basically, we are animals, we are mammals, and basically we are diurnal animals. Diurnal means active in day, but exception student. Student example of nocturnal. रात में जागता है 5 बजे तक, right? Adaptation. तो plant adaptation होगा तो I think animal adaptation भी होते होंगे, right? Okay. एक एग्जाम्पल लेते हैं. In India, we have 2 types of desert, right? Number 1, Thar desert, और number 2, cold desert, right? Okay. Thar desert में एक important animal है कौन? कैमल. दिल्ली में देखियो. रीजन? Environment. Okay. Suppose यहां का कोई स्ट्रीट डॉग है, वो लेके कहां पे? थार डेजर्ट. क्या होगा? डेथ हो जानी है. रीजन? डेजर्ट का जो पर्टिकुलर एनिमल है वो उसके अकॉर्डिंग अडॉप्ट करके बैठा हुआ है, और जो यहां का जो एनिमल पर्टिकुलर एनिमल है वो यहां के अकॉर्डिंग अडॉप्ट करके बैठा है, राइट? Okay. Example. I think example नहीं. PT 2000. I think 17-18 questions. Camel. In India, 2 hum camel found in India. ऐसा कुछ क्वेश्चन था. 2 hum, 1 hum camel naturally found in India. Camel are
good swimmers. Camel, example of mammals. And फिर था options, how many statement are correct. मीन्स आपने अगर ये नहीं पता एडॉप्टेशंस, क्वेश्चन सॉल्व नहीं होंगे. ओके, प्लांट एडॉप्टेशन एंड एनिमल एडॉप्टेशन ऑल्सो दोनों पढ़ने हैं. ओके, प्लांट नंबर 1 हेडिंग है प्लांट एडॉप्टेशंस. फर्स्ट हेडिंग प्लांट्स. फर्स्ट हेडिंग प्लांट. Okay. In geographical point of view, we have 3 types of crops, right? Number 1, rabi crop. Number 2, kharif crop. Number 3, zaid crop. Okay. What is the example of rabi crop? Wheat. Okay, simple example. What is the example of kharif crop? Rice. Okay. And what is the example of zaid crop? Watermelon, muskmelon, right? Okay, cucumber and all. Okay. What is the example of flowering plants? Wheat, rice, muskmelon. Example. What is the example of flowering plant? Number 1 options, rice. Number 2 options, wheat. Number 3rd option, watermelon. All. That's the reason number 1 heading plants. Okay, number 1 heading plants. Okay, now heading plant. Seed. Stem. Root. Okay, basic example. Okay. According to science, we have 5 types of plants. 5. Number 1, Halophyta, Hydrophyta, Bryophyta, Pteridophyta, Gymnosperm and Angiosperm. Gymno and Angio flowering plants. But fruit-laying animals have plants only angiosperms. Example: wheat, rice, muskmelon, watermelon. आपके आसपास जितने भी प्लांट है, एग्जाम्पल ऑफ एंजियोस्पर्म. हाइड्रोफाइटा, एग्जाम्पल एल्गी. ये थोड़ी पूछेगा यूपीएससी. व्हाट इज द एग्जाम्पल ऑफ हाइड्रोफाइटा? seaweed farming. Agarose gel, special component या very important component for DNA fingerprinting. Agarose gel कहां से मिला? Seaweed example of algae. What is this? Hydrophyte means plants. Okay, तो नंबर 1 हेडिंग प्लांट्स. थोड़ा क्लियर लिख दूं मैं, ज्यादा बेहतर है. प्लांट्स.
What is this, sir? Cryptogamous. Just a minute. We have two types of plant, cryptogamous and phanerogamous. Cryptogamous is non-flowering plant, phanerogamous means flowering plant. Easy. Okay. Cryptogamous means non-flowering plants and phanerogamous means flowering plants. Reason सर ये क्यों इतना डेप्थ में क्यों जाना? इंडिया फर्स्ट cryptogamous पार्क, गड़बड़ हो जाएगी करंट अफेयर. दैट्स द रीजन ये बेसिक टर्मिनोलॉजी मुझे पता नहीं है. ओके. Plants, two types of plants, cryptogamous and phanerogamous. Three types of cryptogamous plants. Number one, hydrophytas. Number two, bryophyta. Number third, pteridophyta. Next, gymnosperm and angiosperm. Gymnosperm and angiosperm. Plant classification. We have two types of plants. Cryptogamous means non-flowering plant. Phanerogamous means flowering plants. We have three types of non-flowering plants: hydrophytas, bryophytas, and pterido. Pterido spelling P-T-E-R-I-D-O, pteridophyta. Phanerogamous, two types, gymnosperm and angiosperm. Gymnosperm and angiosperm. Okay. कभी क्वेश्चन आया इससे? What do you think? Okay. Just a minute. Lichen, lichen. You know what lichen? कभी देखा है lichen? Lichen. Okay. We have two types of species: algae plus fungus. Symbiotic relation between algae and fungus called lichen. Symbiotic relation between algae and fungus called lichen. Oh, what is the meaning of symbiotic relation? Right? Okay. Depends on other. No. Example. Species number one. Species number one. Species number two. Okay. Species number one, example human. Species number two, example plant. Okay. बेनिफिट किसको होता है अगर ये साथ में रह रहे हैं? सपोज एक पर्टिकुलर हैबिटेट में है, तो इसमें बेनिफिट ह्यूमन को है या प्लांट्स को? अगर दोनों स्पीसीज को बेनिफिट होगा, रिलेशन कॉल्ड सिम्बायोटिक रिलेशन. बट अगर ओनली वन स्पीसीज को ही प्रॉफिट है तो पैरासिटिज्म. डिफरेंट टाइप्स ऑफ बायोटिक रिलेशंस: पैरासिटिज्म, सिम्बायोटिक रिलेशंस, ओके, कॉमेंसलिज्म, एमेंसलिज्म,
predations. बट आई होप क्लियर. अगर दोनों स्पीसीज को क्या होगा, प्रॉफिट रिलेशंस कॉल्ड सिम्बायोटिक रिलेशंस. ओके, एक एग्जांपल लेते हैं. ओके, एल्गी मींस types of plants, right? We are autotrophs or heterotrophs? We are autotrophs or heterotrophs? Heterotrophs. What is the example of autotrophs? Plants. What are the meanings of autotrophs? Making their own food. Maybe मैगी बना ले गया तो मैं भी मैगी बना लेता हूँ, तो मैं ऑटोट्रॉफ हो गया क्या? तो ऑटोट्रॉफ मीन्स डेफिनेशन इज व्हाट? What is the definition of autotrophs? Depend on other autotrophs. Okay, try. Making food with the help of sunlight called autotroph. मुझको अगर धूप में खड़ा कर दोगे तो ना, मैं ऑटोट्रॉफ नहीं होगा. Algae, example of plants. Example of autotrophs means ये क्या बनाएगा? फूड. ओके, ये क्या प्रोवाइड करेगा? शेल्टर. दोनों साथ में रह रहे हैं, क्या बोल दिया? लाइकेन. लाइकेन एग्जाम्पल ऑफ एयर पोल्यूशन मीन्स इंडिकेटर स्पीसीज. लाइकेन कहां नहीं दिखेगा? जहां पे पोल्यूशन होगा. दैट्स द रीजन कि दिल्ली में नहीं पॉसिबल. मेरे पास है लाइकेन का पिक, मैं जरूर दिखाऊंगा आपको कि व्हाट इज द मीन्स ऑफ लाइकेन. बट सिम्बायोटिक रिलेशन बिटवीन एल्गी एंड फंगस कॉल्ड लाइकेन. लाइकेन एग्जांपल ऑफ इंडिकेटर स्पीसीज. इंडिकेटर मींस व्हाट? एग्जांपल, मैंने लेफ्ट जाना है, मैं क्या इंडिकेट करूंगा? किधर का इंडिकेटर दूंगा? लेफ्ट का. आप लेफ्ट के कहोगे, ऑब्वियसली बात है, राइट? No. Indicator species always environment related है. Okay? Like pollution को indicate कर रहा है. Okay? तो particular environment conditions को कुछ relate कर रहा है. That's called indicator species. Okay? We have different types of species like keystone species, indicator species, flat tip species, umbrella species. Okay? Age species. बहुत सारे. Yes, ma'am. Suppose a particular area है, okay, rock. ग्रीन कलर इंडिकेट कर रहा है किसको? L. और यहीं पे इसके नीचे ये ब्राउन कलर से फंगस. सर ऊपर ही क्यों बनाया एल्गी? ओके, वी हैव वेरी स्पेशल रिएक्शन. कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर, C6H12O6 and oxygen. What is this? This reaction called yes, photosynthesis. H mu means sunlight. ओके, ये सनलाइट के प्रेजेंस में होगा. एटमॉस्फेयर से क्या मिल गया? कार्बन डाइऑक्साइड. लीफ के थ्रू एब्जॉर्ब हुआ. रूट से क्या आएगा? रूट्स के थ्रू वाटर. इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट प्रोडक्ट ग्लूकोज एंड रिलीज क्या किया हमने? ऑक्सीजन. राइट? ये कौन सा रिएक्शन है? फोटोसिंथेसिस.
इन दिस सिनेरियो ये क्या है? लाइकन, राइट? ओके, लाइकन, एल्गी एंड फंगस, कौन करने वाला है फोटोसिंथेसिस? एल्गी। रीजन? प्लांट फोटोसिंथेसिस करेगा, दैट्स द रीजन कि ये ऊपर क्या है, ताकि इसको क्या मिल जाए? सनलाइट। ओके, सनलाइट। ओके, बट इस पर्टिकुलर एरिया का अगर AQI खराब हुआ, क्या होगा? एल्गी और फंगस सिम्बायोटिक रिलेशन, धीरे 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 एल्गी की डेथ हो जाएगी, एल्गी की डेथ हो गई, फंगस को फूड नहीं मिला, दोनों सर्वाइव नहीं करे, धीरे धीरे करके क्या हो जाएंगे? दैट्स द रीजन कभी भी पर्टिकुलर कहीं पे पोल्यूशन है वहां से भाग जाएगा, नहीं मिलेगा। तो ये जो इन्वायरमेंटोलॉजिस्ट जो होते हैं वो क्या करते हैं? क्या ढूंढते हैं? लाइकन। लाइकन है मींस पोल्यूशन लेवल कम है, और लाइकन अगर गायब हो गया मतलब पोल्यूशन लेवल ज्यादा। ओके, दैट्स द रीजन लाइकन एग्जांपल ऑफ इंडिकेटर स्पीसीज, पोल्यूशन, एयर पोल्यूशन इंडिकेटर स्पीसीज। क्लियर मैम? ओके, चिंता ना करो, मैं बहुत डेप्थ में जाऊंगा इसकी। ओके, अभी आज जनरल इंट्रोडक्शन है, जनरल इंट्रोडक्शन। ओके, आई होप क्लियर। प्लांट, two types of plant. Number one, cryptogamous, or number two, phanerogamous. Cryptogamous means non-flowering plants, or phanerogamous means flowering plant. Okay. Cryptogamous, number one heading, hydrophytes. Number one heading, hydrophytes. Number one heading, hydrophytes. Number one, hydrophytes. Hydrophytes. Hydrophytes, hydrophyta, same things. Hydro means what? What? Phyta means what? Plants, right? Means what? इस पर्टिकुलर प्लांट्स का नेचुरल हैबिटेट क्या होगा? What? Example? seaweed And algae, seaweed. Okay. Example? Example? Algae. Example? Algae. Example? Algae. Example? Algae. Okay. I think you know about superfood. Superfood means what? दाल चावल. Superfood means costly food. फिर surplus food. Okay. And okay. Vitamins, minerals, carbohydrate, proteins, fats. I think ये पता होगा ना, जिनमें प्रॉपर रेशो में मिल जाए वो क्या है हमारा? सुपर फूड. सुपर फूड एग्जाम. ओके, वी आर ह्यूमंस, लाइफ स्पैन कितना है हम लोगों का? अकॉर्डिंग टू नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 2024-25. Okay. 69-70. Okay, exactly मुझे भी नहीं मालूम, but 70 अप्रॉक्स. Okay, इंडियंस का. Okay,
टर्टल लाइफ स्पैन 150 प्लस। रीजन वो क्या खाता है? एल्गी। तो क्या कंज्यूम करता है? एल्गी। दैट्स अ रीजन कि सुपर फूड का अलग ही वो है, प्रॉपर कार्बोहाइड्रेट, प्रॉपर प्रोटीन, प्रॉपर फैट्स, प्रॉपर विटामिन, मिनरल्स एंड ऑल। मीन सर घर पे हमारे टंकी है, हम वहां पे वो जमा होती है एल्गी, वो खाने लग जाए हम लोग? नहीं। टाइप वी हैव डिफरेंट टाइप्स ऑफ एल्गी, इडिबल एल्गी एंड नॉन इडिबल एल्गी। कुछ भी नहीं खा लेना, डेथ हो जाना। ओके। हाइड्रो मीन्स वाटर, फाइटा मीन्स प्लांट। तो हाइड्रोफाइटा मीन्स जो कहां पे रह रहे हैं, इनका नेचुरल हैबिटेट क्या है? वाटर। Just a minute. Hydro means plant adapted to a freshwater habitat. Please. Hydrophyta means plant adapted to a freshwater habitat. Example. Okay, plant adapted to a freshwater habitat and saline water habitat, both. Okay, plant adapted to a freshwater habitat and saline water habitat. Example. Algae and seaweed and mangrove. Okay. Any questions? Yes. Lotus. We have many examples. Okay. कितना लिखोगे? आसपास जितने भी प्लांट्स हैं जो पानी में रहने हैं, वो क्या है? हाइड्रोफाइट। हाइड्रो ब्रॉड टर्मिनोलॉजीज है। ओके, इसमें स्पेसिफिक हैलोफाइट्स अलग हो जाता है। ओके, वो अलग चीज है। ओके ओके। Algae versus plant. Okay. CO2 plus water, C6H12O6 and oxygen. Okay. Means प्लांट के थ्रू क्या मिलेगा? ऑक्सीजन। एल्गी के थ्रू भी क्या मिलेगा? ऑक्सीजन। क्वेश्चंस, हमें कौन ज्यादा प्रोवाइड करता है ऑक्सीजन, एल्गी और प्लांट्स? प्लांट्स और एल्गी? प्लांट्स। ओके। मोर देन 60% ऑक्सीजन किसके थ्रू मिलेगा? एल्गी। व्हाई सर? अर्थ more than 70% area water, मतलब more एल्गी। ओके, बट प्रॉब्लम बताओ सर, मुझे एक चीज समझ में नहीं आया, मतलब एल्गी आपको ज्यादा ऑक्सीजन प्रोवाइड कर रहा है, राइट? ओके, तो फिर ये क्यों बोलना है बार बार प्लांट बचाओ, प्लांट बचाओ, एल्गी बचाओ क्यों नहीं बोलते? Sorry? We are destroying plant. Okay. Sorry? Algae is example of plants. Okay. Okay.
Okay. Just a minute. Okay. What is this? Okay. Example, river. Okay. This is what? Fish. Okay. This is what? Algae. Okay. Suppose algal bloom हो गया. Algal bloom means number of algae क्या हो गया? बहुत ज्यादा. इस पर्टिकुलर कोई वाटर बॉडी है, उसमें अगर algal bloom पॉसिबल अगर हो गया, तो फिर ये तो अच्छा है ना कि क्या प्रोड्यूस करेगा? ऑक्सीजन. बट नहीं, ये जो फिश है, एक्वेटिक एनिमल्स, इनकी डेथ हो जाएगी. दैट्स द रीजन कि हम चाहते हैं एलगी ज्यादा बढ़े नहीं, प्लांट का नंबर बढ़े. क्योंकि क्या हो जाएगा इन फ्यूचर? एल्गल ब्लूम, इकोलॉजिकल जो सिस्टम है आपका, इकोसिस्टम कोलैप्स हो जाएगा. ओके. बट हाँ, ये बिल्कुल ट्रू है. मोर देन 60% ऑक्सीजन किसके थ्रू आ रहे हैं? एलगी के थ्रू. ओके. मोर देन 60%. ओके. हाइड्रोफाइटा. एग्जाम्पल algae. फर्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, मोर देन 60% ऑक्सीजन किसके थ्रू मिला हमको? algae. Number 2 point, symbiotic relation between algae and fungus called like an extra point. Okay. Symbiotic relation between algae and fungus called lichen. Okay. पीवाईक्यू देखिए एक बार. मुझे कुछ पीवाईक्यू याद आ रहे हैं. पीवाईक्यू सर क्या बात कर रहे हो? जो मैंने पढ़ाया वही बता रहा हूं मैं. ओके. Just a minute. Which of the following have species that can establish a symbiotic relation with other organisms? Nidaria, fungus, protozoa. Okay. So we don't know what is the means of Nidarians, right? What are the means of Nidarians, right? Example of Nidarians, coral. Okay. Now example. Now answer. Okay. Coral relation बनाया किसके साथ? Coral reef, you know the coral and algae. Coral and algae, symbiotic relations. Okay. Fungus and algae. Protozoa and ant. Ant-Man देखिए हो कभी मूवी? Ant-Man. Okay. Means answer Nidarian, fungus, protozoa. Answer all.
और बताता हूं मैं क्वेश्चन, समझ में आ जाएगा धीरे धीरे। आई होप अभी नहीं समझ में आएगा। रीजन यू नो अबाउट सिक्निडेरियंस, प्रोटोजोअन्स, बट सिम्बायोटिक रिलेशन, मेरा मतलब बस वही था कि सिम्बायोटिक रिलेशन से क्वेश्चन आया है। ओके, in nature, which of the following is or are mostly likely to be found surviving on a surface without soil? कुछ समझ में नहीं आया सर, लाइक इन मॉस मशरूम कुछ समझ में जो विदाउट सॉइल सर्वाइव कर जाए। फर्न क्या होता है? वी डोंट नो, राइट? फर्न क्या होता है? वी डोंट नो व्हाट इज द मॉस, राइट? ओके, चलो फर्न एंड मॉस को छोड़ दे, फिर बताओ चलो आंसर। लाइकेन विदाउट सॉइल सर्वाइव करते हैं? ओके, you know Big Bang Theory? Big Bang Theory means what? Big Bang Theory? Big Bang Theory means what? Earth creation related theory, Big Bang Theory. Okay. Means what? सभी लोगों का जो डेवलपमेंट है वो कहां से स्टार्ट होगा? वाटर से। फर्स्ट टाइम लाइफ कहां से आया होगा? वाटर। मींस फर्स्ट प्लांट कौन होगा? हाइड्रोफाइट्स। फर्स्ट प्लांट कौन सा होगा? हाइड्रोफाइट्स। ओके, मींस फर्स्ट प्लांट हाइड्रोफाइटा, स्लोली इवॉल्व हुआ, फिर क्या बन गया होगा? ब्रायोफाइटा। ब्रायोफाइटा इवॉल्व होकर क्या बना होगा? टेरिडोफाइटा। स्लोली फिर जिम्नो एंड लास्टली एंजियो। मींस मोस्ट डेवलप्ड प्लांट एग्जाम्पल एंजियोस्पर्म, लेस डेवलप्ड प्लांट एग्जाम्पल हाइड्रोफाइटस। ओके, you know amphibians? Amphibians means what? तो टेरेस्ट्रियल में भी सर्वाइव कर ले एंड एक्वेटिक एरियाज में सर्वाइव कर ले, लैंड पे भी सर्वाइव कर ले। एग्जाम्पल फ्रॉग। फ्रॉग कहां मिलेगा आपको? वाटर एंड लैंड बोथ, राइट? यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा, खतरनाक वाला क्वेश्चन, व्हाट इज द एग्जाम्पल ऑफ प्लांट एम्फीबियंस? ब्रायोफाइट। बेसिकली फर्स्ट कहां पे डेवलप हो गए? वाटर। स्लोली कहां पे आया होगा फिर? ये लैंड पे, लैंड पे, राइट? ये कंप्लीटली कहां पे आ गया होगा? लैंड पे। मींस इसको सर्वाइव करने के लिए क्या चाहिए? सॉइल। यू गेट माय पॉइंट? ये कंप्लीटली कहां पे था? वाटर। इसको सॉइल की रिक्वायरमेंट है ना? मींस एल्गी कहां होगा? विदाउट सॉइल, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ब्रायोफाइटा ये कहां पे है भाई? वाटर में भी है और कहां पे? लैंड पे भी। इसको सॉइल नहीं मिलेगी तो कहां सर्वाइव कर लेगा? वाटर में। बट ये पर्टिकुलर प्लांट टेरिडोफाइटा कंप्लीटली कहां पे आ गया? टेरेस्ट्रियल एरिया। मींस इसको क्या चाहिए? सॉइल। इसको भी सॉइल चाहिए, इसको भी सॉइल चाहिए। ब्रायोफाइटा एग्जाम्पल मॉस, टेरिडोफाइटा एग्जाम्पल फर। ये लिखा था उसमें मॉस एंड फर। ओके, आई थिंक अब देखते हैं वो क्वेश्चंस। व्हाट? जस्ट अ मिनट, जस्ट अ मिनट। ओके, नाउ आंसर डी। मैम डी। ओके, क्या एलिमिनेट किया बच्चा आपने? विदाउट सॉइल, है ना? विदाउट सॉइल सर्वाइव करेगा। तो फर्न मींस एग्जाम्पल ऑफ
फॉर एन एग्जाम्पल ऑफ टेरिडो, विदाउट सॉइल सर्वाइव नहीं कर पाएगा, तो फर्न तो पॉसिबल नहीं कर पाएगा। ओके गया। अब सेकंड कॉमन है, लाइकिन दोनों में कॉमन है। अब बचता क्या है, मॉस। मॉस कर लेगा, कर लेगा। आंसर 3। That's the reason, sir. First topic, basic terminologies in depth. Okay. EVS हमने फर्स्ट क्या लिखा सबसे पहले, फॉर्मूला। EVS मीन्स जनरल साइंस, मीन्स कोई पर्सन अगर ओनली ज्योग्राफिकल पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ाएगा नहीं काम हो जाएगा। ओनली साइंस पॉइंट ऑफ व्यू के थ्रू ईवीएस पढ़ेंगे तो नहीं काम होगा। सारे एस्पेक्ट कवर करने पड़ेंगे, कोशिश करेंगे। ठीक है, वी विल ट्राई टू कवर ऑल एस्पेक्ट। क्लियर? ओके, यस प्लीज। एलगी का सिस्टम नहीं होता। ओके, एक मिनट सर ना, राइट। प्लांट मीन व्हाट? स्टेम, रूट एंड लीफ, राइट? राइट? नो सर, plants means photosynthesis reaction, बस खत्म। We have many example without stem भी बहुत सारे plants, without root भी बहुत सारे plants and without leaf भी plant। Okay, बहुत सारे examples। Plant means not stem present है means plant, root present है means plant, ना leaf present है means plant, no। कौन सा रिएक्शन होना चाहिए? Photosynthesis, that's it। Photosynthesis means plant। Okay, I think algae, stem absent, root absent and leaf absent। without root, without leaf and without stem, फिर भी इसको क्या बोलते हैं? प्लांट। रीजन? ऑटोट्रॉफ्स। एग्जाम्पल ऑटोट्रॉफ्स। ओके, फोटोसिंथेसिस रिएक्शन इसमें हो रहा है, दैट्स द रीजन। ओके ओके, अगेन प्लांट्स। फर्स्ट एग्जाम्पल Phytophytas, example algae। algae के हमने different aspect लिखे, right? Number 1 क्या? Maximum oxygen production 60, more than 60%। okay, maximum CO2 absorption भी तो पॉसिबल है, बात एक ही बात है। ओके, नंबर 3, symbiotic relation between algae and fungus called lichen। okay, and algae means autotrophs, stem absent, leaf absent and roots absent। okay, clear? okay, इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजीज और है, एल्गल ब्लूम, फाइटोप्लैंक्टन में बाद में डिस्कस करेंगे अभी। ओके, टॉपिक के सामने दो। नंबर 2 ब्रायोफाइटा। नंबर 2 ब्रायोफाइटा। other name amphibians। you know amphibians? okay, just a minute fish,
reptiles, fish, amphibians, reptiles, and mammals. 5 types of mammals: fish, amphibians, reptiles, birds, and mammals. We are mammals. What is the example of fish? What is the example of fish? Example of fish. Seriously, ऐसे क्वेश्चन आते हैं क्या? UPSC 2016 question. What is the Indian national aquatic animal? National aquatic animals. Gangetic dolphin, right? Okay. Okay. मैं एक और PYQ लेता हूं, तब समझ में आएगा आपको. Just a minute. 2022 PD question. Any idea? MP स्टेट फिश महाशेर उस साल करंट में थी, पूछ डाली. मतलब ऐसे भी याद करने पड़ेंगे क्या? करंट अफेयर, स्पीसीज इन न्यूज का टॉपिक, स्पीसीज इन न्यूज वाला टॉपिक. क्लियर? ओके. तो ब्रायोफाइट आर अदर नेम amphibians of plant kingdom. Amphibians of plant kingdom means what? Amphibians means वाटर एंड लैंड दोनों जगह इजीली सर्वाइव करना. सो क्या बोलते हैं? एम्फीबियंस. विदाउट सॉइल सर्वाइव करेगा? यस. ब्रायोफाइटा मीन्स एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम. विदाउट सॉइल इजीली सर्वाइव करेगा. एग्जाम्पल्स: moss. Example: moss. Example: moss. Example: moss. UPSC 2021 PT question. Okay. Okay. Sir, algae means हाइड्रोफाइट्स इवॉल्व हुए होंगे. क्या बन गया फिर? ब्रायोफाइट्स. ओके. इन हाइड्रोफाइट्स स्टेम, root and leaf absent, right? But in bryophytes, stem, root and leaf present or not? Okay. देखो, stem like structure found, देखो found in bryophytes, found stem like structure, not well developed stem. Okay. Found stem like structure, root like structure and leaf like structure. Found stem like structure, root like structure and leaf like structure, but well developed stem,
root and leaf absent. Well developed stem, root and leaf absent. Well developed root, stem and leaf absent. In Bryophyta, stem like structure, root like structure and leaf like structure present, but well developed root, leaf, stem absent. Example. Okay. Suppose this is rock. And this is what? Water body. Okay, water. Well developed root, well developed stem and well developed leaf. In case अगर यहाँ पे प्रेजेंट है तो क्या मूव करके वाटर बॉडी में जाएगा? ना, इम्पॉसिबल ही नहीं है. अगर वेल डेवलप रूट प्रेजेंट होगा तो वहीं पे रहेगा, स्टेबल, स्टैटिक. ओके, दैट्स द रीजन ब्रायोफाइट क्या होता है? मूव करता है. तो उसमें वेल डेवलप रूट, लीफ एंड स्टेम क्या होगा? एब्सेंट. इसके बाद जो आएगा कौन? टेरिडो. लिखो नेक्स्ट एग्जांपल, नेक्स्ट पॉइंट, टेरिडोफाइटा. 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 First completely terrestrial plant of the world. First completely terrestrial plant. First completely terrestrial plant. You know terrestrial and aquatic? Okay. Terrestrial means land mass. Okay. First completely terrestrial plants means well developed root, well developed stem and well developed leaf are present. Well developed stem, well developed root and well developed leaf are present. Example. For example, for example, for you know bouquet, different colors of plant, different types of leaves, you know. Most aesthetic, I think bouquet 500 to 5000 तक जाते हैं, right? 10,000, 15,000, बहुत महंगे महंगे बिकते हैं. रीजन क्यों? मोस्ट एस्थेटिक प्लांट है टेरिडोफाइटस. इसमें डिफरेंट डिफरेंट कलर्स के आपको क्या मिलेगी? लीफ. फ्लावर मिलेगा ना? ये तो नॉन फ्लावरिंग है, ये नॉन फ्लावरिंग है. ओके, नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट जिम्नोस्पर्म. नेक्स्ट जिम्नोस्पर्म. नेक्स्ट हेडिंग जिम्नो. Next plant, gymnosperm. First flowering plant in the world. First flowering plant in the world. First flowering plant in the world. Okay. Stem present, root, leaf. अरे इससे
पहले वाले में प्रेजेंट है तो नो डाउट उसके बाद वाले में तो होगी बेटा, तो लिखने की जरूरत नहीं है, ओके, दोबारा बार 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 फालतू कॉपी नहीं करना है, ओके। एग्जाम्पल कभी कोई हिल स्टेशन गया है? कोई भी हिल स्टेशन? ओके, हिल स्टेशन में क्या देखा होगा, कैसे प्लांट मिलते हैं और कैसे मिलते हैं? कोन शेप, कोनिफेरस प्लांट्स, ओके, कोनिफेरस प्लांट। व्हाई? ओके, एंड यस, मेन रीजन। सपोज मैं पहुंच गया मान लो श्रीनगर, स्नोफॉल हुआ, हम लोगों के जो प्लांट है उसमें लीफ ऐसे मिलती, राइट? स्नो का डिपोजिशन होगा, वो प्लांट की डेथ हो जानी है, फिर दैट्स द रीजन वो किस शेप के होते हैं? कोन शेप, कोनिफेरस प्लांट। तो जितने भी कोनिफेरस प्लांट्स हैं वो किसके एग्जांपल मिलेंगे आपको? जिम्नो के, ओके। सैगो जानते हो? सैगो, ओके। फास्टिंग करते हो? फास्टिंग, फास्टिंग समझते हो? उपवास, फास्टिंग, ओके। फास्टिंग में क्या खाते हो? फ्रूट्स एंड साबुदाना, यू नो साबुदाना? साबुदाना, साबुदाना मीन्स साबुदाना एग्जाम्पल ऑफ जिम्नोस्पर्म। जिम्नोस्पर्म की रूट से क्या मिलता है? साबुदाना, सैगो, ओके। एग्जाम्पल coniferous plants like Christmas tree, like Christmas tree, Christmas tree, Deodar tree, Deodar tree, Deodar UPSC 2024 PT question, Deodar tree. Gymnosperm example coniferous plant like देवदार, साइकस, पाइनस, बहुत होते हैं ना, बट पाइन्स लिख सकते हो, पाइन्स, ओके, पाइन्स, देवदार, क्रिसमस ट्री, etc. लास्ट एंजियो, लास्ट एंजियोस्पर्म, लास्ट पॉइंट एंजियोस्पर्म। Now one point, most advanced and most developed plant in the world, most advanced and most developed plant in the world. Number 2 point, okay, first flowering plant. What is the example of first flowering plant? जिम्नो। तो फिर ये क्या है? सेकेंड होगा। फर्स्ट प्लांट जो क्या प्रोवाइड करेगा आपको? फ्रूट्स। इसके अलावा कोई भी प्लांट आपको फ्रूट नहीं देता। देखो, फर्स्ट फ्रूट प्रोवाइडिंग प्लांट इन द वर्ल्ड, फर्स्ट एंड ओनली fruit providing plants in the world. Example, मैंगो नहीं बोलना, वो तो बहुत इजी है, मैंगो कोई भी मैंगो ही बोलता है। अरे बहुत सारे फ्रूट्स हैं, ओके। वीट के जो सीड मिल रहे हैं ना, वो भी एक टाइप का फ्रूट्स ही है। टमाटो वो क्या है? फ्रूट्स, ओके। एग्जाम्पल लिख लो, सब मीन्स इसमें क्या क्या आ जाएगा? राबी, खारिफ एंड ज़ैद, बेसिक एग्जाम्पल। एग्जाम्पल्स, मैंगो, पपाया, बनाना, राबी क्रॉप, खारिफ क्रॉप एंड ज़ैद क्रॉप, etc. बनाना फ्रूट्स,
अच्छा, फिर वही डेफिनेशन ही गलत है हम लोगों की, राइट। टोमेटो वेजिटेबल नहीं है, क्या है? फ्रूट। एप्पल फ्रूट नहीं है। ओह सर, व्हाट, ये क्या चल रहा है? कैरेट क्या है? रूट। ऑनियन बल्ब है। सर व्हाट, ये क्या चल रहा है सर? ये साइंस है। ओके, आने दो, टॉपिक्स आने दो, मैं करवाऊंगा सर। ओके, कि बनाना कैसे ग्रो हुआ, राइट? बनाना कैसे फ्रूट्स के एग्जाम्पल्स में पहुंच गया, सब पढ़े, चिंता मत। एंजियोस्पर्म। Okay, I think we complete the plants classifications. We have 5 types of plant. Number one, hydrophyta. Hydrophyta means what? Hydrophyta means what? Water plus plant. Plant plus algae. No, no. Hydrophyta means? Sorry? Okay, plant lives in water. Okay, hydrophytes. Example? Algae. Okay. Number two, bryophyta. Bryophyta means amphibians of plant kingdom. Means water and terrestrial both. Okay. Example? Moss. Okay. Next, pteridophyta. Pteridophyta means what? Completely terrestrial. Okay, completely terrestrial. Okay. Example? Frog. Okay. Next. Next start होंगे आप क्या? Flowering plants. Flowering plant number one, gymnosperm. Gymnosperm examples? Well developed है ना? Okay. Pinus, cycas, and very. Okay. Angiosperm means fruit providing plants. No, fruit providing plants. Okay. Next topic. HW. Next topic, HW. HW means homework. Homework. Types of crops. Types of crops. Types of crop. We have 3 types of crop, right? Number one, Rabi, Kharif and Zaid. सबको पता है? पूछो. Mustard. Mustard. Rabi, Kharif. Millets. Rabi और Kharif. Okay. Pulses. Okay. We are Indians, right? So we have largest producer of pulses, largest importer of pulses, largest consumer of pulses. मतलब इमेजिन इतना दाल खाते हैं हम लोग कि कम पड़ जाता है हमको, हम प्रोड्यूस भी कर रहे हैं, हमको बाहर से मंगाना पड़ता है. लार्जेस्ट प्रोड्यूसर, कंज्यूमर्स एंड इंपोर्टर ऑफ पल्सेस इन द वर्ल्ड. रीजन, एक टाइम दाल ही बनता है घर में. ओके. ब्लैक ग्राम मीन्स काला चना. काला चना, राइट? गूगल है ना, गूगल करो. ब्लैक ग्राम मीन्स फास्ट. ब्लैक ग्राम. ब्लैक ग्राम मीन्स काला चना नहीं, पल्सेस. ये किसका एग्जाम्पल है? ठीक है, इसको हिंदी में उड़द, उड़द की दाल. ओके. ओके. ग्रीन ग्राम. रीजन, यूपीएससी
23 पीटी के क्वेश्चन सही है, मैं बता दूंगा आपको। 22 23 में आए क्वेश्चन, हलवा नहीं है। ओके, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पढ़ेंगे इसको, टाइम आने दीजिए, ठीक है। वैसे रीजन कि मैंने आपको एक होमवर्क दिया है, क्या, टाइप्स ऑफ क्रॉप्स। क्या करना है बच्चा उसमें, क्या क्या, व्हाट इज द एग्जांपल ऑफ राबी क्रॉप, व्हाट इज द एग्जांपल ऑफ खरीफ क्रॉप, एंड व्हाट इज द एग्जांपल ऑफ ज़ैद क्रॉप। इनफ। ओके, इनफ। एग्जांपल मस्टर्ड, मस्टर्ड है ना, न्यूज में है, न्यूज में जीए मस्टर्ड, जीए मीन्स जेनेटिकली मॉडिफाइड मस्टर्ड, तो न्यूज में है, तो पढ़ना पड़ेगा हमको ये सारी चीजें। ओके, ठीक है, क्लियर मैम? ओके सर, मैम, रेस्पेक्टेड सर एंड मैम, एनी डाउट्स, एनी डाउट? ओके, टुमारो संडे राइट, ओके, संडे ऑफ, ठीक है, तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट टाइम मंडे, है ना। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।